Good morning students, I am your Farzana ma'am, your English teacher, and today we are going to take a poem. It is a very interesting poem and the writer is also have explained about the area when we see our earth from top part, almost the highest part of the sky, and when we see down how our earth or how our land looks like. So, this is the explanation in the poem given by our poet. His name is Zulfikar Ghosh. Let us start with first the reading on the top, children. So, have you opened your book to this page? Let us begin. Can you imagine, it's the name of the poem is Geography Lesson. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. Here is a poet's description of just as a view of the city and some questions that come to his mind. So, let us begin with the poem and understand what is the point of view of our poet who wants to explain about the upper view when we see the earth from upper view from high up the sky, and some questions which he has. Let us see some questions. When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scale 6 inches to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. So, I will explain this first stanza. There are some words which are little difficult for you to understand. The meaning is there given to you on the next page. So, जब आपका jet यानी कि एक jet plane है, aeroplane है, it may this jet is not the aeroplane usually where many passengers aboard it. It's a plane where only 1 or 2 or maybe 6 person can fit into it. So, जब वो sprang होता है, जेट जो प्लेन होता है ज़्यादातर एक सीटर का भी होता है, तो वो जब उड़ता है आसमान में, स्काई में, जब वो sprang into the sky, एकदम से झटके से जब उड़ते हैं, sprang it, तो वो take a flight on top of the sky. तो आप जब नीचे देखते हैं, it was clear why the city, तो वो पूरी तरह से आपकी जो शहर है वो पूरा दिखता है और कैसे बना हुआ है उसका स्ट्रक्चर पूरा बराबर से दिख जाता है आपको कि what is built and how it is built, whether the buildings are properly structured, properly architected or not. तो वो ऊपर जाके आपको सारा एक व्यू मिल जाता है कि whether it is a really a better built city or not. तो वो डेवलप द वे इट हैड, यानी कि वो जैसे डेवलप हो रहा है वो ऊपर से वैसे ही दिख रहा है कि नहीं. हम अंदर तो बहुत अपने आप को फ्लरिश बोलते हैं, दैट वी आर फ्रॉम अ फ्लरिश एरिया, अ कंट्री इज़ फ्लरिशिंग, अ सिटी इज़ गोइंग, यानी कि हम अच्छे खासे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी तरक्की हो रही है. वी आर फ्लरिशिंग इन आर all the fields of education, of our business, of our factories, but does it view the same way from when we see it from the top? Seeing it scale 6 inches to the mile, यानी कि 1 माइल ऊपर भी उड़े हम, उससे थोड़ा ज़्यादा भी उड़ जाएं, तो there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, यानी कि एक क्लियर पिक्चर दिख जाता है. seemed an inevitability, एक क्लियर पिक्चर दिख जाता है हमें जब हम ऊपर उड़ते हैं कि नीचे क्या चल रहा है. कुछ haphazard वे में तो नहीं चल रहा है. haphazard मतलब जब आप प्लान नहीं करते हो कोई चीज़ को, आपका फंक्शन जब कुछ होने वाला होता है स्कूल में तो प्लानिंग के साथ होता है, और प्लानिंग नहीं की हमने,
जस्ट 1 मिनट पहले कोई आ गया है और हमने कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, 1 या 2 घंटा मिला है, तो इतना अच्छा नहीं होता है प्रोग्राम, इतना अच्छा नहीं जाता है जितना जब हम 2-3 दिन का प्लानिंग करते हैं। तो हैप्पीजार्ड मतलब विदाउट प्लानिंग, इधर ही है अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल, और उसमें कुछ स्टाइल भी नहीं रहता है, अपना खुद का एक व्यू नहीं रहता है। हमारा जो जिस तरीके से हम घर के अंदर रहते हैं उस तरीके से हमारा घर के बाहर भी तो हमारी नेचर पता चलनी चाहिए ना। घर के बाहर तो हमारा सब कचरा वचरा होता है, रबिश इज बीइंग स्कैटर्ड हियर एंड देयर। घर हम इतना अब साफ रखते हैं तो वो व्यू जो हमारे घर के बाहर है वो नज़र आता है, हमारा नेचर उससे नज़र आता है। व्हेन समवन गोज़ ऑन टॉप ऑफ आवर हाउस और व्यू करते हैं तो उसको हमारा नेचर नज़र आता है। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, तो दिस इज द वे द पोएट हैज स्टार्टेड द पोएम। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टैंजा। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. तो जब वो छोटी सी ही दूरी पे जाता है, 1 माइल के थोड़ी दूरी पे आ जाता है, 6 इंचेस टू माइल, तो वहाँ पर आपका हैप्पीजार्ड वे में नज़र आता है। योर फुल सिटी इज़ बीइंग viewed with its haphazard way of buildings created. And when the jet sprang into the sky about 10,000 feet, यानी कि उसका ऊंचाई और जब ज़्यादा हाई हो जाती है जेट की तो उसको और कुछ नज़र आता है। क्या क्या नज़र आता है कि उसका जो कंट्री है वो जो कंट्री है और सिटीज़ हैं वो रिवर के साइड बराबर से क्यों पॉपुलेटेड हैं, वैलीज़ क्यों पॉपुलेटेड है, क्योंकि उधर सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं। मीन्स यू गेट द क्लियर आइडिया ऑफ कंट्रीज़ एंड सिटीज़ एंड वैलीज़, और ऊंचे जाने पे कि वो क्यों उधर पॉपुलेटेड हैं, because of the rivers and all the nature grown populated over there, the thickness of the nature. And because one more reason the poet has given is the logic of geography, हमें नज़र आती है कि population हमारा कहाँ पर क्यों ज़्यादा है। that land and water attracted man, और जहाँ पर पानी है वहीं पर ही आपको बिल्डिंग्स और घर नज़र आएंगे। वो आपका जोग्राफिकल वे ऑफ जो पोजीशन है आपकी बिल्डिंग्स की, घरों की, वो आपको वहाँ पर नज़र आएंगी जहाँ पानी है, जहाँ रिवर है। ओके, वॉज क्लियरली डेलिनेटेड मीन्स इट्स स्पेसिफाई, यानी कि आप पूरी तरह दिखाई दे रहा है कि ये सब इधर इधर क्यों हैं, पानी की जगह पे आदमी क्यों सेटल्ड हैं, रिवर उनके आसपास है तो रिवर की जगह पे उन लोग लेक्स बना लेते हैं। ओके, सो व्हेन द रिवर इज़ फ्लोइंग दे मेक देयर लेक्स ओवर देयर, and with the facility of the water, obviously this is the most foremost thing which should be there when the man is creating his living at that area, that water is the most important source of living. तो वो ज़्यादातर नज़र आ रहा है जब हमारा जेट ऊपर एकदम ऊपर जा रहा है। ओके, when the jet reached 10,000 feet, अब देखें when the jet rose 6 miles high, और 10,000 feet से और 6 miles high जब जा रहे हैं, it was clear the earth was round and that it had more sea than land. Turn your page, children. But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. तो जब और ऊंचाई पे जाती है हमारी नज़र, जब नीचे आती है ऊंची चीज़ पे जाने के बाद, तो हमें और क्लियर नज़र आता है कि जब कोई भेदभाव हमारे लैंड में नहीं है, लैंड कम है और पानी ज़्यादा है, ओके,
फिर हम क्यों डिफ़िकल्ट रहते हैं अपने आप से एक साथ रहने में, वही हमारा क्वेश्चन, हमारे पोइट का क्वेश्चन है. Why the people are against each other, why they don't like to live with each other, why they are killing each other, and why there is the height, it is not clear why. यानी कि वो हाइट क्यों है जो हाइट होनी नहीं चाहिए हमारे लोगों के अंदर, जबकि लैंड में तो वो हाइट है नहीं, लैंड में कोई डिफरेंस नहीं है, सबके लिए लैंड बराबर है, पानी बराबर है. द नेचर इज़ गिविंग यू a proper proportion of its nature, of its facility. So why can't we use it in a normal way? Why we are fighting for that land, why we are fighting for that water, and why we are not staying together? So these are the questions which has arisen in this poem by the poet. Let's see this glossary. Inevitable, that cannot be avoided, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. हैपेजार्ड, विदाउट प्लान और ऑर्डर, ऑर्डर में नहीं होता है. एंड डेलिनेटेड मीन्स शोन, दर्शाना. ओके, वर्किंग विद द पोएम, फाइंड 3 or 4 phrases in stanza 1 and 2 which are likely to occur in a geography lesson. तो phrases आपको फाइंड आउट करने हैं. Then seen from the window of an aeroplane the city appears, यानी कि एरोप्लेन से आपकी सिटी कैसे दिखती है, एज हैपेजार्ड एज ऑन ग्राउंड, एज नीट एज अ मैप, एज डेवलप्ड एज नेसेसरी. सो मार्क द राइट आंसर. आई होप इट डिपेंड्स विच height the aeroplane is flying, and then we can assume our answer. So you can write 2 answers, whether the height according to the height of the your aeroplane, and then you can share the answers accordingly. Yes, what is the next 3? Which of the following statements are examples of the logic of geography? तो example कौन से हैं logic of geography के लिए? There are cities where there are rivers, so obviously this is the logic. Then cities appear as they are not from 6 miles above the ground. तो cities दिख रही हैं 6 miles से. Is it right? Logic है कि नहीं? Then it is easy to understand why valleys are populated. ये भी नज़र आ रहा है valleys क्यों populated है. So this is a logic way of thinking and saying the answer yes. It is difficult to understand why human hate and kill one another. तो ये जो है ऊपर जाके नज़र नहीं आ रहा है. This we have to understand by being on the ground. Okay, this is though going up and understanding the human nature, it's illogic, but it will be logic when we are on the ground, our feet are on the ground and understand the nature of human being. The earth is round and it has more sea than land. तो ये हमें लॉजिक नज़र आता है हम जब ऊपर जाते हैं. सी ज़्यादा है, ब्लू ब्लू दिखता है, हमारा अर्थ राउंड दिखता है. दिस इज़ लॉजिक. मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट. तो 2 थिंग्स आपको क्लियर बतानी है हाइट पे और नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट. तो 2 चीज़ें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है, विच इज़ क्लियर एंड नॉट क्लियर. तो नॉट क्लियर में हम बता सकते हैं द फीलिंग्स ऑफ द पीपल. Okay, and clear you can see the logic things over here which are clear. So here the answers are right above. In 3 the answer is there of the 4th question. So children, we have completed the poem understanding and its question answers discussion. I'll be soon sending you your answers to these questions through my WhatsApp, and even you should try answering these questions in your point of view, in your own words, children. If you don't try, how you learn? So trying makes you learn more about the language. So till then children, bye.